Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva. Jayam Vishnupad Paramahansa Pariprajakacharya Stotra Sutasi Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. ISKCON Samstapakacharya Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramahansa Pariprajakacharya Stotra Satasi Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyamakunda Radha Kundi Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Navadvip Dham Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Samveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Glories to Sri Prabhupada. Like a Gita. I will read 2 verses from the end of the Bhagavad Gita. Are you going to translate what I just said? अभी महाराज जी जो है भगवद गीता के कुछ श्लोक से चर्चा करेंगे. It is chapter 18, the perfection of renunciation, संन्यास की सिद्धि, text 68 and 69. 68 और 69. Text 68. Ya idam paramam guyam mad bhaktesha vidasyati bhaktim mai param kritva mame vaishyasya samshaya ya anyone who जो Okay. Idam, this, paramam, most, guyam, confidential secret, mat, of mine, bhakteshu, among devotees,
Abhidasyati, explains bhaktim, devotional service, mai, unto me, param, transcendental, kritva, doing, mam, unto me, eva, certainly, eshyati, comes, asamshaya, without doubt. For one who explains this supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, उसको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी, अनंत जो मेरे पास है. Purport by Srila Prabhupada. Generally, it is advised that Bhagavad Gita be discussed amongst the devotees only. ऐसी सलाह दी जाती है कि भगवद गीता जो है भक्तों के बीच में ही चर्चा की जाए. For those who are not devotees will understand neither Krishna nor Bhagavad Gita. जो भक्त नहीं है वो गीता को भी नहीं समझ पाएंगे और कृष्ण को भी नहीं समझ पाएंगे. Those who do not accept Krishna as he is and Bhagavad Gita as it is should not try to explain Bhagavad Gita whimsically and become offenders. जो लोग कृष्ण को और गीता को यथार्थ में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध नहीं करना चाहिए. Bhagavad Gita should be explained to persons who are ready to accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead. भगवद गीता की विवेचना उनके साथ की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं. It is a subject matter for the devotees only and not for philosophical speculators. ये खाली भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतनों का नहीं. Anyone, however, who tries sincerely to present Bhagavad Gita as it is, will advance in devotional activities and reach the pure devotional stage of life. जो भी व्यक्ति भगवद गीता का यथार्थ प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, भक्ति में प्रगति करता है और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त करता है. As a result of such pure devotion, he is sure to go back home, back to Godhead. ऐसे शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना निश्चित है. So in this verse and in the next verse, Sri Krishna glorifies the preacher. इस श्लोक में अगले श्लोक में भगवान कृष्ण प्रचारक का गुणगान कर रहे हैं. And he says that one who preaches the message of the Bhagavad Gita will, in the end, go back home, back to Godhead. भगवान बोलते हैं जो भी गीता का प्रचार करता है अंत में वापस भगवत धाम लौटेगा. Back to Krishna. वापस कृष्ण के पास. And Srila Prabhupada's mood was very much as described in this and the next verse, to preach the message of the Bhagavad Gita. प्रभुपाद जी का भावना वैसे ही था जैसे इस श्लोक में अगले श्लोक में बताया गया है, भगवद गीता का प्रचार करना. And we are also in December, the month of Gita Jayanti and the month of book distribution marathon, during which we want to distribute as many Bhagavad Gitas as possible. और हम इस गीता जयंती के महीने में बुक डिस्ट्रीब्यूशन है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवद गीता का वितरण किया जाए. And thus we will also fulfill the instruction in this verse, text 68. और इस तरह से हम भी जो श्लोक बताए हुए उनको प्राप्त करेंगे. And in the end, go back home, back to Godhead. और अंत में हम वापस भगवत धाम लौट सकते हैं. Text 69. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च
na bhavita na chame tasmad Govinda chami tasmad anya priyataro bhuvi. anya priyataro bhuvi. Na, never. Na, No, never. never. Cha, Cha, and. and. Tasmat, Tasmat, then him. then him. Manusyeshu, Manusyeshu, among men. among men. Kaschit, Kaschit, anyone. anyone. May, May, to me. to me. Priyakritama, Priyakritama, more dear. more dear. Bhavita, Govinda, will become. will become. Na, Na, nor. no. Cha, Cha, and. and. May, May, to me. to me. Tasmat, Tasmat, then him. then him. Anya, Anya, another. another. Priyatara, Priyatara, dearer. dear. Bhuvi, Bhuvi, in this world. in this world. There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. इस संसार में उसकी अपेक्षा और कोई सेवक मुझे ज्यादा प्रिय नहीं है और नहीं कभी होगा. So here Krishna says that the preacher of the message of the Bhagavad Gita is his dearmost servant. यहाँ भगवान बताते हैं भगवद गीता का प्रचारक जो है उनका सबसे प्रिय सेवक है. There is no one more dear to Sri Krishna than he, nor will there ever be one more dear. भगवान को उससे बढ़कर प्रिय कोई नहीं है और बाद में भी कोई नहीं होगा. So for all times, the preacher of the message of the Bhagavad Gita is the dearmost servant of Sri Krishna. तो हमेशा के लिए भगवद गीता का प्रचारक जो है श्री कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय सेवक है. And so we understand that Srila Prabhupada was the dearmost servant of Lord Krishna. इसे हम जान सकते हैं कि प्रभुपाद भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय सेवक हैं. And those who follow in the footsteps of Srila Prabhupada by distributing the knowledge of the Bhagavad Gita will also become most dear to Krishna. और जो प्रभुपाद के पदचिन्हों में चल के प्रभु जी का प्रचार करते हैं वो भगवान को सबसे प्रिय बनेंगे. And as Srila Prabhupada said, when we are recognized by Krishna, what more is there to attain? What more can we want? प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण ने हमें पहचान लिया तो और क्या प्राप्त करने की जरूरत है. So Krishna is very pleased with the preachers. कृष्ण प्रचारक से बहुत प्रसन्न है. And of course, to preach, we must also practice. और प्रचार करने के लिए कुछ आचरण भी करना होता है. We should all be acharyas हम सबको आचार्य बनना चाहिए who teach by example. जो अपने उदाहरण से सिखाते हैं. As Srila Prabhupada said, if you're smoking a cigarette and you tell someone not to smoke, it won't have much effect. अगर आप दूसरों को बोलते हैं कि आप सिगरेट मत पीजिए और आप स्वयं पीते हैं तो कोई इसका प्रभाव नहीं होगा. There is a story that once a mother brought her son to Mahatma Gandhi, एक कहानी है कि एक माँ अपने बेटे को महात्मा गांधी से मिलाने के लिए आई. and she complained that her son eats too much sweets. बताया कि मेरा बेटा मिठाइयाँ बहुत खाता है. And she asked Mahatma Gandhi to tell the son not to eat so many sweets. महात्मा गांधी को बताया कि मेरे बेटे को समझाओ कि इतना मिठाई नहीं खाना चाहिए. So Mahatma Gandhi said, all right, come back in 2 weeks. महात्मा गांधी बोले कि आप बाद में 2 हफ्ते बाद आना. So she came back with the son after 2 weeks, and Mahatma Gandhi said, don't eat so many sweets. 2 हफ्ते बाद बेटे को ले आए. महात्मा गांधी ने बोला कि ज़्यादा मिठाइयाँ मत खाया करो. So the mother asked, why didn't you just tell him that 2 weeks ago? Why did you make me come back after 2 weeks and then you told him? माँ ने पूछा कि आपने पहले क्यों नहीं बता दिया, 2 हफ्ते बाद क्यों बताया?
And Mahatma Gandhi replied, because at that time I was also eating sweets. महात्मा गांधी बोले उससे मैं भी बहुत मिठाई खाता था। So how could I tell him not to eat मैं sweets? तो कैसे बोल सकता हूँ मिठाई नहीं खाने? So we have to practice what we preach, जो हम प्रचार करते हैं खुद अभ्यास करना चाहिए and then our preaching will have effect. और हमारे प्रचार बहुत प्रभावशाली होंगे। And of course, we should be very serious and sincere in our sadhana. और हम अपनी साधना में बहुत गंभीर होना चाहिए। Rising early in the morning, सवेरे जल्दी उठना, chanting our minimum 16 rounds, कम से कम 16 माला जप करना, and studying the Bhagavad Gita and other books of Srila Prabhupada's. श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता और दूसरे पुस्तकों का अध्ययन करना। And then we will have spiritual strength. हमें आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होगी। And with that spiritual strength, we will be able to preach. और इस आध्यात्मिक शक्ति मिलने से हम प्रचार कर पाएंगे। So thank you all for receiving me so nicely this evening. तो सबको धन्यवाद, इतना अच्छी तरह से आपने मेरा स्वागत किया आज शाम। And let us all chant the Hare Krishna Maha Mantra. हरे कृष्ण महामंत्र। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And now what? If you like, would you like to sing a notes about the books? Yeah, Somebody likes it. yeah, sure. Yeah. So let us first of all express our deep gratitude to His Holiness Giriraj Maharaj. As you know, Maharaj was on his way to Mumbai, and very limited time we had, and but still, out of love and compassion upon us, he decided to stop in and give us his brief association. Let us thank loudly chanting Hari Bol. More auspicious, as soon as Srila Giriraj Maharaj arrived, there was auspicious rainfall. Everyone acknowledged that one of the dearmost associates of Srila Prabhupada, Lord Radha Govinda, has come to bless us. Hari Bol. So we will pray to Maharaj that next time he comes, he may come with more time. He can stay here and sometimes go to Pune. Can I ask one question? Yes? Hare Krishna Maharaj, thank you for your Nigerian words. So, I started my Krishna consciousness from Juhu itself, and there I was constantly hearing about the courage, determination, and all the patience which you and all the devotees showed on Juhu, where the temple was built. So, we see in our lives little bit discouragement in Krishna consciousness or activities which we are trying to do for Krishna. We really get so much discouraged. And there were so many incidents which were so discouraging in your life, but still it is seen in your book that you had so much commitment and courage to serve Srila Prabhupada. How can we bring that courage and determination to serve Srila Prabhupada in the same way? महाराज जी प्रश्न पूछ रहे हैं महाराज से कि हमने आपकी किताब में पढ़ा कि कैसे जुहू मंदिर में कितने सारे बाधाएं, कितने सारे घटनाएं हुए, फिर भी आपने उत्साह बनाए रखा बहादुरी के साथ। तो हमारे अंदर एक गुण कैसे आ सकता है? Yes, we should, well, as Rupa Goswami advises in the Upadeshamrita, the nectar of instruction, Utsaha Nischaya Darya. रूप गोस्वामी कहते हैं उपदेशामृत में उत्साह निश्चय धैर्य। Utsaha means enthusiasm,
उत्साह का मतलब है उत्साह. Nischaya means confidence, निश्चय मतलब बहुत विश्वास रहना. and Daryat means patience. धैर्य मतलब धीरज बनाए रखना. So you need to have both enthusiasm and patience. हमें उत्साह भी होना चाहिए और धीरज भी बनाए रखना चाहिए. Srila Prabhupada said if we have enthusiasm without patience can lead to a desire to control. अगर हमारे पास धीरज नहीं है तो हमारे अंदर वश में करने की भावना आ जाती है. And patience without enthusiasm can lead to lethargy. और अगर हमारे अंदर खाली धीरज है उत्साह नहीं है तो आलस्यपना है. So we need both enthusiasm and patience, and nischayat means confidence. निश्चय का मतलब है कि बहुत विश्वास बना है. So in the case of Juhu, we were there to serve Srila Prabhupada and Shri Shri Radha Rasa Bihari. जुहू में हम थे श्री प्रभुपाद और राधा रास बिहारी की सेवा करने के लिए. And we didn't really consider obstacles or impediments. हमने कोई बाधाओं के बारे में कभी विचार भी नहीं किया. Like once His Holiness Bhakti Swarup Damodar Swami said to Srila Prabhupada, एक बार भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ने प्रभुपाद जी से कहा, I have only one department, the Bhaktivedanta Institute, मेरा एक ही डिपार्टमेंट है भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, and I have to deal with so many problems. और बहुत सारी समस्याएं को देखना पड़ता है. And you have the whole worldwide movement. I can't even imagine how many problems you have to deal with. और आपको पूरी दुनिया के मूवमेंट का देख रहे हैं, आपको कितनी सारी समस्याओं का देखना पड़ा. And Srila Prabhupada replied, problems? I don't see any problems. प्रभुपाद बोले मुझे तो कोई समस्या नहीं लग रही. I see only service to my Guru Maharaj. मैं सिर्फ अपने गुरुदेव की सेवा को देख रहा हूँ. So he didn't distinguish. उन्होंने कोई फर्क नहीं माना. It's just different varieties of service. उन्होंने देखा कि अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं. And yeah, he was always enthusiastic. और हमेशा उत्साही थे. At one stage when we were having so much trouble getting the permission to build, Srila Prabhupada said, never mind, we will turn Hare Krishna land into a bus stop. प्रभुपाद को बहुत समस्या है तो बोले हम कृष्ण लैंड को बस स्टॉप बना दें. We'll send our buses out with devotees and books, and after they distribute the books, they can come back and get refreshed spiritually and get more books, and then they can go out and distribute more books. और लोग वहाँ से जाकर पुस्तक बांटेंगे, फिर आएंगे, फिर थोड़ा फ्रेश होकर बाद में फिर और जाएंगे और पुस्तक बांटेंगे. So he said, no problem. If we don't get the permission, we'll just turn Hare Krishna land into a bus stop. हम अगर परमिशन नहीं मिले मंदिर बनाने की तो हरे कृष्ण लैंड में बस स्टॉप बना है. Any other questions or comments? Can you give him the mic? Krishna Maharaj, you have been interacted with Prabhupada many times, so we like to hear some special moments with him that we will. बोल रहे हैं कि आपने प्रभुपाद के बहुत संग किए, उनके साथ विशेष समय बिताया, उसके बारे में बताएं. There were many special moments, बहुत सारे विशेष अवसर थे. but there's one incident that comes to mind when Srila Prabhupada touched me and patted me on the back. एक घटना में याद आ रही है जब प्रभुपाद ने मुझको स्पर्श किया और मेरे पीठ पे फैलाया. And he rarely touched disciples. और दूसरे शिष्यों को. But we were in Gorakhpur, हम गोरखपुर में थे. and Srila Prabhupada wanted to establish an altar for his deities.
प्रभुपाद अपने रीति से एक ऑल्टर सजाना चाहते थे। And he wanted to decorate the altar with foliage. वो चाहते थे कि ऑल्टर को पत्तियों से और झाड़ियों से सजाया जाए। So he sent me out into the woods to get foliage. मेरे को जंगल में भेजा गया कुछ लकड़ी और ये पत्तियां सजाने के लिए। And I wasn't sure how much to get, but I didn't like tear any branches live, but whatever I saw on the ground, I picked up those branches. मैं रास्ते में जो भी गिरे हुए पत्तियां थे सबको मैं उठाकर लेकर आया। And finally, I had so many branches that I couldn't carry anymore. और मेरे पास इतना सारा हो गया कि और मैं उठा ही नहीं सकता था। So I carried the branches up the stairs, and there was Srila Prabhupada at the altar, and I dropped all the branches on the floor. और मैं जब लेकर गया और वहाँ प्रभुपाद खड़े थे, मैंने सब लकड़ी पत्तियों को रख दिया और And Srila Prabhupada was smiling and beaming with happiness. प्रभुपाद खुशी से मुस्कुरा रहे थे। And then as I was offering my obeisances, he patted me on the back. मैं प्रभुपाद को धन्यवाद प्रणाम किया, प्रभुपाद मेरे पीठ को सहलाने लगे। And yeah, I don't even know how much he needed the branches by then, मुझे पता नहीं कि उनको पत्तियों की जरूरत भी थी कि नहीं थी। but he was pleased by my effort. वो मेरे प्रयास से प्रसन्न थे। Hare Krishna. Any other questions or comments? I have a question. Yes. I have been almost like more than 50 years that you have been dedicated to the service of Prabhupada and Radha Rashmi and wherever you are. So like we find devotees coming, going, we would like to get your instruction on how can we be consistent and consistently serve Prabhupada for the rest of our lives. प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कैसे हम जीवन भर सेवा करते हैं। Well, Srila Prabhupada said that Krishna consciousness is 90% association. प्रभुपाद जी ने बोला कि कृष्ण भावना में सबसे 90% संग का प्रभाव। So we should associate with advanced devotees और जो भक्ति में आगे बढ़े हैं उनका संग करना चाहिए। who are committed to Srila Prabhupada's service. जब प्रभुपाद की सेवा में लगे हुए हैं। Srila Rupa Goswami has enumerated 64 items of devotional service in Bhakti Rasamrita Sindhu. भक्ति रसामृत सिंधु में 64 काम बताए गए हैं भक्ति के। And of those, he says 5 are most potent. और उसमें से 5 हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। Sadhu Sangha, Nama Kirtana, Bhavana, Sadhu Sangha, Nama Kirtana, Bhagavat Shravanam, Mathura Vasa, and Murti Sharanvita Sevana. That means associating with devotees, Sadhu Sangha, Bhagavat Shravana, hearing Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, Mathura Vasa, residing in Mathura, Murti Sharanvita Sevana, and serving the deity with faith and veneration. And the first is Sadhu Sangha. तो उसमें 5 बताए गए साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण और मथुरावास श्री मूर्ति से। पहला है साधु संग। And Srila Rupa Goswami gives a definition of Sadhu Sangha. रूपा गोस्वामी बताते हैं साधु संग का मतलब क्या है। Swajati ashaye snigde sadhu sangha swatovare. Swajati ashaye snigde. Swajatiya means literally, in the same community, and in our case, we could say a follower of Srila Prabhupada.
और यहाँ बताया कि सजाती जो सिमिलर जो प्रोफाइल के फॉलोअर्स उनका संग करना है। Swajati Ashaye Snigde, and Srila Prabhupada translates that as having a similar affection for the Lord. और ऐसे भक्तों का संग करना जिनका भगवान के साथ उसी प्रकार की आसक्ति है। But the Snigde can also be taken to mean that the sadhu should be affectionate to you. एक और मतलब यह है कि साधु का आपके प्रति स्नेह का भाव होना चाहिए। So Swajati Ashaye Snigde Sadhu Sangha Swatovare. And Swatovare means he should be more advanced than you are. और वो साधु को आपसे ज़्यादा भक्ति में एडवांस बड़ा होना चाहिए। So that type of sadhu sangha will keep you in Krishna consciousness and engaged in service to Guru and Gauranga. और ऐसे करके साधु का संग करने से हम कृष्ण भावना में बने रहेंगे, गुरु गौरव की सेवा में मग्न रहेंगे। और किसी प्रश्न है? Hare Krishna. Thank you very much for your association. Maharaj, I have friends, we are in school, we are very young, so can you please give us one message that we should always keep in our mind so that we can sustain in Krishna consciousness? I missed the first part. What was the first part? We are young children, we are teens. We are very young, so can you share some message that we can always remember? Always remember Krishna and never forget him. Yeah, there's a verse. Satatam Vishnu Vishmartavya Najatu Chidya. One should always remember Krishna and never forget him. And all the other rules and prohibitions are servants of the one injunction and prohibition to always remember Krishna and never forget him. Hare Krishna. Here. Hare Krishna. Maharaj, my question is how to understood the mood of a guru and how to do the seva according to understanding the mood of a guru. I couldn't hear. Maybe keep the microphone a little further. Or... थोड़ा दूर रख के Yeah. understand the mood of the guru. So my question is how to understand mood of a guru and how to do the seva according to understanding of a mood of a guru. गुरु का भाव कैसे समझना और गुरु के भाव के अनुसार कैसे सेवा करना। Well, we understand the mood of the guru by his statements and by his actions. हम गुरु के भाव को समझते हैं उनके वाक्य के द्वारा और उनके व्यवहार के द्वारा। And we want to follow in his footsteps, हम उनके पदचिन्हों में चलना चाहते हैं in his mood. और उनके भाव को। And so we try to speak as he spoke and act as he acted. जैसे उन्होंने बोला वो हम दोहराते हैं और जैसे उन्होंने व्यवहार किया वैसे हम करते हैं। Devotees are feeling that we should be Okay. Okay. Right, so, But I would like to speak for the manager. yeah, that's fine. That's good. Another book. Yeah. So let us thank Maharaj for this wonderful short session, short and sweet. Hari Bol. So H.H.Giriraj Maharaj has especially written very wonderful books. The Prabhupada personally instructed him to write, and especially the one book about the Jibhu temple. I will build you a temple. I will speak a little bit in Hindi also, so that I will speak little English, little Hindi.
ये जो है नई किताब है कि मैं आपके लिए मंदिर बनाऊंगा, और ये जुहू मंदिर की कहानी है। The story about how the Radha was carried temple, which Maharaj was referring about so many challenges, difficulties which came, and how devotees under the blessing of Srila Prabhupada and guidance of Giriraj Maharaj, they stayed loyal and built this wonderful temple. So this book is very wonderful book. I have personally read it, and many devotees have appreciated. It will give one an insight on how to determine on executing the order of the spiritual master. तो ये विशेष किताब है जो महाराज ने लिखी है, and there are many other books, watering the seed, बीज का सिंचन, and many moons. तो ये सब किताबें आज उपलब्ध हैं, and especially महाराज ने agreed to personally sign the books of those who take today. So we welcome all the devotees to please come and take a look at the bookstall, and please take the book. आज के दिन special offer है कि महाराज खुद से आपके नाम के साथ आशीर्वाद देंगे, will give blessings with your name that will eternally remain. So please come forward and please accept the books. जो भक्त आना चाहते हैं वो उस तरफ लाइन लगा सकते हैं। We'll get a table. Okay. You need some water.